स्मॉल चीज कर लेते हैं। अच्छा, we need to know what is component of a vector. What is component of a vector? Quick, and then I'll give. You know what is a component of a vector? Component of a vector किससे बोला जाता है? No, I'll tell you something. एक example देते हैं, तब समझ में आएगा। मान लो समर हॉलिडेज में बाहर घूमने जाना है, इस बार चांस नहीं मिला, अगले साल भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और हम लोग अपना बैग पैक कर लिए, ट्रॉली बैग, और उसको ऐसे पुल करके लेके जाओ, ठीक है? तो जब पुल करके लेके जाते हैं, ट्रॉली बैग जाता किधर है? इस डायरेक्शन में जाता है ना, लेकिन हम लोग पुल क्या किस डायरेक्शन में करते हैं? हम लोग पुल किधर करते हैं? इस डायरेक्शन। तो हम लोग जिधर पुल कर रहे हैं, जिधर पुल कर रहे हैं, वो चीज वैसे उधर ही जाना चाहिए था ना, लेकिन उधर नहीं जाके वो कैसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है? ग्रेविटी के कारण वो नीचे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स ट्रू। लेकिन हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? वो तो हम लोग एट एन एंगल लगा रहे हैं ना, वो सामने जा कैसे रहा है? दोनों कंपोनेंट मिलके एक सिंगल पॉइंट है। देयर कम्स द कांसेप्ट ऑफ कंपोनेंट, मींस ये जो फोर्स है इसका एक इफेक्ट होता है इस डायरेक्शन, जो जितना इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इस डायरेक्शन में होता है उसको ही हम लोग फोर्स का कंपोनेंट नाम डायरेक्शन। अभी कंपोनेंट निकाला कैसे जाएगा वो अलग बात है, वो बाद में आ रहा है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट व्हेनेवर वी अप्लाई अ वेक्टर अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वेक्टर का इफेक्ट सिर्फ उस डायरेक्शन में ही रहे। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। When you apply a vector along a certain direction, it is not necessary that its effect will be only along that direction. A vector can have its effect some other direction also than that of its own. माने इसका अपना जो डायरेक्शन है उसको छोड़ के कोई दूसरा डायरेक्शन में भी उसका इफेक्ट हो सकता है। So the effect of a vector along some other direction than that of its own is what we call component of a vector. ठीक है, let's write this down. Iterative component. Iterative component. Component is the effect of a vector. Component is the effect of a vector along some other direction than that of its own. Along some other direction. Than that of its own. Along some other direction than that of its own. Tell me, can you understand this statement? This statement हो जाएगा से? So this is the first time you are knowing that a vector may have its effects along some other direction than of its own. Okay? Now the question is, how do you find out this component? So component find out करने के लिए what we do? First, from the point where the vector starts, we draw a line along which we need the component. Say, ये force इधर है, we want the component of this force along the horizontal direction. That means I want the effect of this force along the right. तो वो direction में हम लोग एक perpendicular draw करते हैं यहाँ से. वो direction में हम लोग एक perpendicular draw करते हैं. Then first we figure out what angle is it. कितना एंगल बनाना है, हो गया? अब क्या करना है, हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज मालूम है हम लोग को, बेस निकालना है। सो हाइपोटेन्यूज और बेस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिलेट करता है? cos. So cos theta, if I take this as x, can I write cos theta is equal to base by hypotenuse which is f? I am. तो x को क्या बता सकते हैं लोग? f cos. So x is nothing but f cos. So the component of any vector along any other direction is that vector multiplied by cos of the angle between the vector and the direction. ठीक है? So write this down. ठीक है, ये डायग्राम पे ड्रॉ करना, ठीक है? You don't need to draw this back, because this was just need to understand. This is the force and this is the direction. Just keep it.
component. F cos theta is what? Component of F along the horizontal direction. Right. Now we vertical to the chart down the direction chart. So let's take a general direction. So this is a vector A. This is a vector A, and this is the general direction, any direction. Okay. So say this angle is theta. Then what you do? You draw a perpendicular from the tip of the vector on this line, right? Then of course this is base. So अब यहाँ पर करने से सेम थिंग आएगा. देखो cos theta equal to base by hypotenuse x by a. So x is equal to a cos theta. So कोई भी वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, सिर्फ वो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ द एंगल. बस वेक्टर इनटू cos ऑफ द एंगल करेंगे तो कंपोनेंट निकल जाएगा. Is that clear? Yes or no? So now, so you can make this also. This and this quickly. जल्दी से. Well, now, what is resolution of vector? Resolution of vector is opposite of addition of vector. When we add two vectors, we get one resultant. That means from two vectors we get one vector. So resolution of vector is from one vector you break it up into two vectors. Okay? Even you can break it up into three vectors. But in general, we'll be sticking to two vectors. Okay? How we do it? Very simple. Say this is the x-axis and this is the y-axis. Okay? And say you have a vector A which makes an angle theta with the x-axis. तो already हम लोग ये तो सीख गया है ना कि x-axis में component कितना होगा बताओ? ये सीख गए हम लोग. x-axis में component एक cos theta होगा. अब मुझे बताओ ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 90 degree minus. The whole angle is 90 degree. So this will be 90 degree minus theta. Sir, ठीक है सर अच्छा. इधर 90 degree minus theta होगा, right? एक बार हमारे पास बोलो if this is 90 degree minus theta, what will be the component of A along this direction? A cos theta. Right. So this direction the component will be A cos of 90 degree minus theta. बोलो, you agree? Why? Because ये एंगल कितना है? 90 degree minus. तो उस एंगल का cos होगा. कुछ सोचने का जरूरत नहीं है. ये थीटा था, cos थीटा हुआ. এটা थीटा ছিল, সেটা cos थीटा होगा. তাহলে এটা 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, cos of 90 डिग्री माइनस थीटा. But you all know complementary angles क्या बोलता है? Right. So this can written as A sin theta. So अगर ये A cos theta है तो you can say this is A sin theta, right? Right? So हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ एक वेक्टर हम लोग के पास, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे हम लोग दो वेक्टर निकाल रहे हैं. ये है A cos theta और इधर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये है A sin. तो मतलब क्या दो वेक्टर एक वेक्टर से निकल रहा है. सो ये रिजल्टेंट का ठीक ऑपोजिट है ना. तो एक बार देखते हैं कि रिजल्टेंट करने से भी क्या ये ओबे होगा. सोच लो ये दो वेक्टर है A cos थीटा और तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला? A स्क्वायर प्लस A sin थीटा स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 इनटू A cos थीटा sin थीटा. अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. So this will be cos 90 degree. You understand this? Eta হচ্ছে A আর এটা হচ্ছে B. Agree? This is what? This should be R square. Hana. Right. See, this will be 0 because cos 90 degree is 0. और ये क्या हो जाएगा? A square cos square theta. दोनों में से अगर हम लोग A square कॉमन ले लेंगे तो cos square theta प्लस sin square theta कितना होगा बोलो? तो देखो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया, मतलब रिजल्टेंट वही ये आया जो ये था पहले. right ना? So this is called resolution of a vector. और ये बहुत काम का चीज है. कैसे काम करता है ये हम लोग वेनिस से देखेंगे. ठीक है? So you know what is resolution of vector? One vector you are breaking it up into two components. All on x axis have always normal to each other. This is very important.
the two vectors which you are getting, they should be normal to each other. ठीक है, जल्दी से ये बना लो.